Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. Dear students, I hope you all are doing well, and I hope this Ramadan be the best Ramadan of your life. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसाइरम। सबसे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। हम शॉर्ट वाइज और लॉन्ग वाइज अलग अलग देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हैं आईडीई, कंपाइलर, प्रोग्राम, प्रोग्रामर, डिबगिंग, सिंटैक्स, वेरिएबल, कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके पेपर में आ सकती हैं और इसके अलावा जो और डिफरेंट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 से वो देखते हैं। द फर्स्ट शॉर्ट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्टर एंड इंट डाटा टाइप्स. Second is write two rules for naming variables. The third question is name two high-level programming languages. The fourth question is what is a header file. Fifth is what is meant by the declaration of variable. Sixth question is what is meant by the numeric constant. Seventh question is write the syntax for initiating the variable. Eighth question is what is meant by the data type of the variable. डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट. सेकंड इज डिफाइन वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट डाटा टाइप्स. तो फर्स्ट चैप्टर के आपने ये 2 जो लॉन्ग है इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन की। एंड चैप्टर नंबर 2 विच इज़ यूज़र इंटरेक्शन। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्कैन एफ फंक्शन, एस्केप सीक्वेंस, rational operator, arithmetic operator, logical operator, assignment operator, operators and the relational operators. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज. सेकंड इज राइट द यूजेस ऑफ एंड ऑपरेटर. The third question is write the uses of OR operator. Fourth question is write the use of NOT operator. Fifth question is what is meant by the precedence of an operator. The sixth question is write the syntax of printf. अब हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो पहला लॉन्ग है जो यहाँ पे 8th मेंशन है, वैसे ये फर्स्ट आपका लॉन्ग है। एक्सप्लेन प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट करेक्टर फंक्शंस. एंड द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ here the question number 9, what are the logical operators, explain any 3 logical operators. Question number 10 is define escape sequence, explain different escape sequences that are used in C language. तो चैप्टर नंबर 1 के जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसी चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट प्रोग्राम जो आपने अच्छे से कर लेना है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ quadrilateral and calculate the area of it. The second question is write a program that takes 2-digit number from the user, computes the product of both digits and shows the output.
The third question is write a program that displays the following output using the single printf statement. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है write a program that takes the radius of a circle as input. The program should calculate and display the area of the circle. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं, विच इज़ कंडीशनल लॉजिक. The firstly we will discuss the most important definitions, and the first definition is control statement, other is selection statement, third is sequential control, and the fourth is condition. तो ये डिफाइन करके या व्हाट इज़ करके ये आपकी डेफिनेशंस आ सकती हैं. इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं. द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स. अब हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के. फर्स्ट लॉन्ग इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन डिटेल्स. सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इफ एल्स स्टेटमेंट. और अब इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ students as an input and displays pass if the percentage is above 50. Second is write a program that take two integers as input and tells either the first one is a factor of second one or not. Third question is write a program that takes a number as input and displays yes if the input number is a multiple of 3 and has 5 in unit place. अब हम चैप्टर नंबर 4 की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं, विच इज़ डेटा एंड रेपिटिशन. The first most important definition is data structure, second is array, third is loop structure, fourth is loop, fifth is nested loop, and the sixth is loop body. Now we will discuss the important short questions of chapter number 2, and the first question is write the syntax for of loop. Second is explain the two purposes of using loops. Now we will discuss the important long questions of chapter number 4, and the first question is write a program that stores the ages of 5% in an array and then display on screen. The second question is write a program that displays the values from 1 to 10 on computer screen. Third question is write a program that adds corresponding elements of two arrays. Fourth question is write a program that displays the factorials of number from 1 to 7. अब हम लास्ट चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5 functions, and the first definition is function, second is built-in function, third is function parameters, and the fourth is user defined function. और इस चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट हैं वो आपके 3 हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय, आपने इन डेफिनेशंस के अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय कॉलिंग अ फंक्शन. सेकंड इज़ write two advantages of using functions. Third is write the syntax of the function signature. Now we will discuss the most important long questions of chapter number 5. इसके just students 2 ही questions हैं. First is write 4 advantages of functions, and the second is write a function int square to calculate the square of an integer x.
स्टूडेंट्स, आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो पेयरिंग स्कीम की वीडियो है उसको लाजमी देखना है। आपने पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेनी है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening me.